सुनो सुनो सुनो, हम लोगों ने आज फिर से वापस एक इवेंट कराया है इस सर्वर पे। और हम सब आ चुके हैं वापस इस इवेंट में, और आज हम लोग करेंगे कुछ क्रेजी एक्टिविटीज। एक्चुअली हम लोगों ने कर ली है, हम लोग प्रेजेंट करेंगे कुछ क्रेजी एक्टिविटीज। और ये जो इवेंट है, इस इवेंट का नाम है द राइट हेमिस्फीयर इवेंट, बिकॉज इस इवेंट के अंदर हम लोग सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल करने वाले हैं वो होगा द राइट हेमिस्फीयर ऑफ अवर ब्रेन। तो आज आज एक्चुअली राइटिंग एक्टिविटी थी हमारी, जिसमें हम लोगों ने कुछ क्रेजी क्रेजी स्टफ राइट किया है। और वो स्टफ अभी हम लोग प्रेजेंट करेंगे, देखते हैं किसने क्या लिखा है। और ये कोई कंपटीशन नहीं है, ये बस एक एक्टिविटी है, तो मजा आने वाला है। जस्ट टू सी हाउ क्रिएटिव आवर महफिल मेंबर्स आर। तो मजा आएगी। चलो आगे हम लोग देखते हैं। किंग्समैन बताओ। तो अब बात ये है कि हम लोगों को राइटिंग प्रैक्टिस के लिए कुछ प्रॉम्प्ट्स दिए गए थे, जिसको कि आप अनाउंसमेंट में जाए तो आपको पता चलेगा कि ये कुछ प्रॉम्प्ट्स थे, या फिर आप कह सकते हो कुछ टॉपिक्स थे जिनके बारे में हमको लिखना था। और हमारे पास 1 घंटे का समय था। कितनों ने यहाँ पर बैठ करके हमारे साथ अभी तुरंत लिखा है, और कितनों ने प्री राइट करके भी हमारे को सबमिट किया है, और कितने तो अभी ऐसे भी हैं जो कि लिख रहे हैं बाय द टाइम जब हम लोग ये इवेंट कर रहे हैं, ताकि लाइक क्योंकि कुछ लोग लेट हो गए थे वगैरह वगैरह। तो जो भी चीजें आएंगी वो इन्हीं टॉपिक्स पे बेस्ड होंगी। एंड आई थिंक कि अब हम लोग को स्टार्ट करना चाहिए धीमे धीमे। तो सबसे पहले किसका पढ़ना है बताओ। यस सर। चलो चलो। तो भाई किसका पढ़ना है सबसे पहले, मुझे बता दो। दिया किसका दिया पढ़ना किस स्टार्ट। किसने ये बताओ। मुझे आ गया है कोई विदित का। वॉलंटियर है? मुझे आ क्या गया कोई है वॉलंटियर है? मुझे आ गया है ड्रैगन का। मुझे आ गया है बोई सिनेस्टे का। स्टार्ट स्टार्ट तो मैं ड्रैगन का करूंगा पढ़ जिसने लो, सबसे ड्रैगन का पहले पढ़ लो, दिया ड्रैगन उसका कर का। दो। ठीक है, तो आप विदित का ड्रैगन का मैं पढ़ लो यार। अच्छा, विदित का खोल दिया फिलहाल तो मैंने। चलो विदित का पढ़ लेते हैं। तूने इतना ही लिखा है, यही है। लेट्स गो। डाउनलोड करिए आगे की तरफ है, वैसे हो गया ये वो लेट्स काम कर लो। ओके गो। सर। लेट्स फिर से गो। चालू करोगे क्या भाई? कोई बात नहीं। लेट्स तुमने गो। बोला जो धीरे कर जो दो। छोटा सा लिख पाया मैंने लिख दिया, जिसका जिसका ज्यादा इजी होता नहीं है। है। ये अरे चैट जीपीटी। नहीं चैट वो मैंने वो करवाया है वो जीपीटी। मेरी ग्रामेटिक का। 1500 अरे तो स्पेलिंग मिस्टेक थोड़ा थी सा वो थी पैराग्राफ ये। क्या देख लेते हैं, तो सोचते विदित हैं चैट भाई जीपीटी ही है। तो विदित वाओ। भाई एक काम करो, पढ़ो इसको जरा। पढ़ो, तुम ही पढ़ो। तुमने लिखा है तो लिखो। मैं नहीं यार मेरे से पढ़वाओगे क्या? हाँ, पढ़ो। चलो चलो ठीक है, मैं ही पढ़ता हूँ। रुको मैं मेरे वाले नोटपैड में कर लेता हूँ। हम्म। ठीक है, वाओ विदित स्टार्ट भाई करूँ? क्रेजी। अरे हाँ क्या वाह भाई, क्रेजी? कुछ फैंटेसी लिखी क्रेजी है नहीं इसने है, तो। सिंपल है। इसने फैंटेसी लिखी है। करो करो, मैं This एक्साइटेड हूँ। story starts with Albus Dumbledore opening his eyes in a bedroom different from his own. Everything feels new. There is no traditional fire, no owls. Dumbledore is young, smart, and adventurous. When he found himself in this new setting, he was amazed and fascinated. At first, he couldn't understand, but later he realized what he had gotten himself into. As a genius, he knew what he had to do, so he adapted to this new life. At first, he did not understand anything. Box talked, light turned on with a torch, people spoke like into small object in their hands. Magic was nowhere, yet everything worked. So he watched, he listened, and he learned. He spoke little. He learned the rules of this new place. He learned how to live without spells. One day, while sitting in a small cafe, he met her. Her name was Elizabeth. She looked at him and asked why he looked so lost. He smiled at her, a boy who looked so different from all those people around him. Dumbledore said he was from a very far place, a place which is now nowhere to be found. She did not find it amusing, nor did she laugh. They talked, they smiled, they talked about everything. Time passed, and they met more often, grew closer. Dumbledore always liked the way she talked and listened to him. Days passed. Elizabeth showed him the city, and the Dumbledore never told her about his reality. As more time passed, Dumbledore fell for her ardor. She was the kindest person he ever met. They both started dating. One day, while crossing a bridge, Elizabeth asked him about his home and parents. Dumbledore told her that his parents were good people. They were close until a tragic event happened in his life. Dumbledore had a little sister who always admired her big brother and always looked forward to him. One day, when they were in their home, some burglars came to their house.
The Buglers attacked both of them. Albus tried to confront them, but in the action, the Buglers attacked his sisters and she was killed. This left a great damage to the whole Dumbledore family. Due to this, his parents resented him because he was unable to save his sister. After listening to this, Elizabeth was shocked and she became sad for Dumbledore. Elizabeth, who was his kind soul, took his hand and said, I am glad you came. But one day, when Dumbledore went back to sleep and woke up, he found that he was in his own reality. He was shook once more. Stone walls, old portraits, a small fire burning low. A loud cried somewhere in the dark. He was back. Time had taken him. Albus Dumbledore stood still from a long moment. Everything was familiar. Everything was same. But his chest felt empty. He knew he had lost something. He just didn't know what. Days passed, life moved on. His future waited for him, heavy and unavoidable. Power called to him. Great plans formed in his mind. Yet sometimes he stopped. Sometimes he felt sad for no clear reason. He did not remember the city, he did not remember the cafe, he did not remember the face or her voice. Her name was gone. But at late night, when the castle was quiet, he sat by the fire and felt a pain he could not explain. A soft ache, missing like a missing dream after waking. Tears would come without reason. वाह भाई अरे ये तो वाह! बहुत भाई ये बढ़िया तो बहुत लिखा है बढ़िया था भाई। भाई। तो बहुत बढ़िया क्या है भाई। बात अब तो है मुझे डर लग रहा है भाई। कि मेरा वाला क्या होगा। मजा मजा भाई। क्या बहुत बात है बढ़िया। भाई। तो क्या अच्छा था, बात ये है। बहुत तो बढ़िया। सीरियसली बहुत अच्छा था भाई। क्या बात है भाई। नाइस बहुत बढ़िया। नाइस। Thank you, thank you, चलो अब thank you. साहिल भाई। वाओ। साहिल भाई। ओके, अब अरे ड्रैगन का पढ़ लो, ड्रैगन का पहले। ड्रैगन का लंबा है ड्रैगन की ना। बारी। हाँ ड्रैगन तो का अगला पढ़ लो। ड्रैगन ही है, ड्रैगन का उसके पढ़ बाद लो। तू है। चल, अब आती है ड्रैगन जी ओके। की बारी। इन्होंने कुछ 11 मैसेज भेजे हैं मुझे, भाई साहब ने। तो ऑलराइट। अरे अरे कुछ और मत दिखाओ भाई. अरे अरे अरे, ये सब क्या भेज रखा है? कासाब्लांका है? Yes. क्या ये क्या है? क्या भेज रखा है ये सब? अच्छा, टीआरएक्स की भी आ गई क्या? ठीक है, चलो अच्छा, एमएस वर्ड में है इनका। बढ़िया बात है। चलो ड्रैगन भाई, या तो तुम पढ़ोगे या तो बोलो तो मैं ही पढ़ दूं, जैसा बोलो। या जिसको भी पढ़वाना हो वो पढ़वा दो। अरे पढ़ दे यार, मेरा खास खास के मर जाऊंगा। चलो मैं ही पढ़ देता हूँ। It is dark, dark everywhere. Some say it is the end, and some say it is the beginning. But for me, it is life, trapped in the void, alone, and a non stop influx of thoughts about what could have been and what could be. This is the biggest curse to a living soul. Although calling this trapped consciousness a soul is not quite right. I think it all started 15 or 16 years ago when I was a familiar face. Her face when I saw a familiar face. Her face, I was on her bus to school, but it was the first time we acknowledged each other's presence. Acknowledgement became trust. First, she trusted my song choices, then eventually she trusted me. Trust evolved into friendship and then into something else. It was short, but I stood the test of time and the calamity itself. Time is the thing we all lost after the great calamity. They said the gods holding the fabric of the universe failed. Our dimension was doomed, and time was running out. The great calamity was going to consume us all. But it took the chance. But I took the chance. I became the replacement so that time could flow. But without me, now I am just thoughts flowing in the fabric of reality. I think I was her reality, and she was everything to me. The calamity took everything from everyone. It started slowly. When we first held hands, it felt like the clock's ticks slowed down. When we kissed, the angels from the sky watched us. Her tears felt like they brought rain to the real world. The world I remembered was beautiful, full of colors and light. Everything was so bright, even the nights were full of hope. I knew another beautiful day was waiting for me. But this was not true. Or I can say it is certainly not true now. The day it happened, June 19th, we were not just holding hands, we were holding on to ourselves, planning the future, planning the next day, and watching the sunset.
Suddenly, the world saw the fracture in the sun for the first time. That crack in the sky, it was the calamity itself. The gods came from the heavens for Judgment Day. Even that day feels less painful than this. Thinking about feelings, they ended a long time ago. I should say, statistically, it should feel less painful than this. Trapped inside everything but still in nothing. Knowing everything that is happening but unable to influence anything. That must be the saddest thing. I think I can't feel sadness, not anymore. But I can remember the feeling, the first kind to the first kind to end them, to end themselves were the scientists. They were supposed to be the first ones to find out what happened to the sun. Why did it vanish? Why was there another sky covering our own? It was like witnessing the formation of a new world. But this world was full of suffering. Plants and animals died slowly, their bodies remaining as they were. The predators of the food chain were first to vanish from existence. There were places or zones where there was no effect from the calamity and everyone migrated there. But for us, it was like everything we went. It was like everything we went. The calamity followed. We were the plague. We ran and ran to every safe place, from one zone to another, not because of hope this time, but because of sheer will, a will that I think the gods had lost, a will I can't lose now, not while she is living, or while her kid is out there. This darkness, when I saw it for the first time, it was consuming, slowly destroying my world and my home. But now it is my home. I understood it then, the calamity. It wanted to consume all. I willingly stepped inside. The scream of her voice was the last thing I felt. It didn't hurt me. Pain requires a body, which disintegrated when I crossed the threshold, but I could feel something else, the weight of a collapsing world, like Atlas holding the world. So here I am. They say it is the end, but they are wrong. As long as I hold this pose, as long as I concentrate on the image of her face, the sun will shine, the clocks will tick, and the rain will fall. I don't know the cause of the disorder. Maybe it followed us because we were the anomaly, or maybe the gods had lost their will. But I know one thing, I am here, and I am the darkness that lets her shine. वाह भाई वाह, ये तो मतलब बहुत वाह! बहुत डीप है, ये पता है, बहुत बहुत डीप बढ़िया। है। बहुत तुमको बहुत क्या समझना बात पड़ेगा समझना है! यार। पड़ेगा आप लोगों को। मज़ा आ गया, तुमको समझना ग्रैंड इसके स्टोरी ऊपर मज़ा है, आ पता गया, है, ग्रैंड। मज़ा आ गया। पता है ये वो है, ये वो चीज है जिसको कि शेक्सपियर पीनट को लेवल। दोबारा देखना पड़ेगा। ये वो चीज है, समझ रहे हो तुम? यस मतलब सर। मज़ा आ गया। यस। बहुत मतलब बड़ी एक ग्रैंड बार बढ़िया स्टोरी भाई है। ड्रैगन भाई। अरे बहुत ये बढ़िया। ये अरे एक डीप मिनट है एक भाई, मिनट मैं ये बहुत पूछना डीप है चाहता हूँ भाई। कि बहुत ग्रैंड है ये पूरी विजय वर्ल्ड विजय भी। तुम्हारा वो टॉपिक कि तुमने क्या प्रॉम्प्ट यूज़ किया था उसमें? मैंने वो दो चीजों का मिक्स करा था मैंने, एक तो कि पास्ट पर्सनैलिटी वापस आ रही है और लव स्टोरी। ऑलराइट और ड्रैगन तुमने? साइंस फिक्शन? बढ़िया। पोस्ट कॉपी। पोस्ट अपोकैलिप्टिक वो अच्छा जो सही है, होता है सही है। पोस्ट कॉपी की वर्ड। अरे अरे मैं बोला ही नहीं जा हाँ, समझ कोई गया। बात नहीं भाई। वैसे इसमें तुमने कुछ ग्रैंड कुछ है। ऐसे रहा। ऐसे वर्ड्स लिख फंबल हो रखे गया। हैं जो तुमसे मतलब बोले जा रहे होंगे, मतलब ऐसे मैं पूछ रहा हूँ तुमसे। अरे मत। एनीवेज एनीवेज, मैं तो चलो बोल रहा हूँ भाई, भाई शेक्सपियर लेवल ड्रैगन है तो भाई। बहुत बढ़िया भाई। मतलब कि बढ़िया था यार, तो काफी अच्छा था, मजा आ गया बहुत यार। बहुत मस्त था। ग्रैंड यस स्टोरी है, यस। बहुत बड़ी है। इट वाज रियली गुड यार, मजा आ गया। चलो सही अब में। अगला किसका चलो पढ़ना है? सेनिस्पाई का पढ़ थला लो कि भाई। सब सीधा थाला पे आ जाओ, क्या करूं? देख लो जो सही चलो लगे। पर थला कितना थला बड़ा है कर लो, आपका? थला कर लो। थला का कर कितना देता बड़ा है हूँ, आपका? क्योंकि छोटा ही है थला मेरा को तो। जाना भी है ना, थला बोल रहा था, थला का पहले कर देते हैं। चलो आ जाओ, ठीक है कर दैट्स लो कर लो। व्हाट। अलग कर लो। कितना बड़ा थला है का कर आपका? लो, थला का कर लो, थला कर छोटा लो। ही अरे है। अरे 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 वाह, अरे वाह। अरे ये क्या हो ओके रहा है? ओके रुको थला रुको भाई, मुझे चेक करने दो। ओके भाई। ओके थला अरे भाई, रुको देखने दो यार ये क्या हो रहा है। ओके थला भाई। ओके भाई, ओके। वेट वेट ग्रैंड। वेट यार। अरे बाप रे, क्या खुला हुआ है, अरे बाप रे। किंग्समैन इन ऋषि
Shared Shared. one brain cell in ये split तो fiction. प्ले सुन वाह पर था, क्या ये तो प्ले स्टोरी सुन है, पर था। वाह ये सबसे बढ़िया है। This is the story भाई. इस पे बनानी चाहिए थी भाई. Shit भाई, भाई तू मिस हो जैसे गया. ही एक्सेस देगा बता देना भाई, इसी लिंक से खुल जाएगा, तू एक्सेस दे दे बस। तेरे ईमेल कैसे पे देते हैं आएगा, Gmail आई होगी. Gmail ईमेल पे आया आएगा होगा. उसमें? तुम्हें, देखो Access मांगने तो शेयर उसे का accept कर लो बस. तुम्हें ये ईमेल आया होगा एक। सबसे बढ़िया फिक्शन यही है, किंग्समैन एंड ऋषि भाई शेयर्ड वन ब्रेन सेल। अबे अबे केतन, बेस्ट है पहले ये भाई. देख ले कि हमारे चैट में कुछ अंड सड़ंग तो नहीं है, क्योंकि चैट दिख जाएगी सीधे। अंड अरे सड़ंग। बाप रे, लेमी देख ले लेमी भाई, लेमी देख ले, इवैल्यूएट। देख ले भाई, पहले देख ले। Evaluate. Oh my god. नहीं है आसपास तो नहीं है, ऊपर रहेगी, हाँ तो उतना आसपास ऊपर नहीं नहीं है। जाएगा, आई गेस हाँ। नीचे ही आएगा सीधे। कर दिया, दे दिया। पीडीएफ भेज दूं तुम्हें? पीडीएफ अबे पीडीएफ तूने भेज दूं दे दिया, Text भी व्हाट्सएप एक्सेस पे? दे भेज दो देना। यार. साले एक्सेस नहीं दे पा रहा है। अबे टेक्स्ट कॉपी करके अरे चैट में डाल दे। अरे आप अगले पे चलो. ये जब तक एक्सेस देगा तब तक आप अगला पढ़ हो गया। लोगे. अरे मैंने अभी भेज अभी दिया स्टोरी व्हाट्सएप पे, राइटिंग बट चल रही है ना? पीडीएफ अरे उसको जाना नहीं, है ना, राइटिंग नहीं उसके चल रही, कर अब Yes वो sir. प्रेजेंटेशन कर रहे हैं। राइटिंग हो गया। शोइंग चल रही है। मेरा भी चेक कर लेना, मैंने भेज दिया है। हाँ हाँ आ गया तेरा। पुर्तगाली नहीं भेज दिया। अबे सुन रोहित, वो हटा दियो यार चैट से। हाँ, सब बता दिया। वो बढ़िया मुझे बढ़िया। फॉरवर्ड करके नहीं हटा देना। हरा। चलो हाँ रेडी चलो, करो, स्टार्ट करो। चला भाई, पीडीएफ दे रहे हो, क्या दे रहे हो, कहाँ दे रहे रेडी करो, मैप चेंज करो। हो? हाँ मैप चेंज करे क्या? ओके. करो रुको, मैप चेंज। लोड आउट हाँ सेट हाँ, किस मैप कर रहा हूँ। पीडीएफ लगाना है? भेज दिया मैंने तुम्हें। पीडीएफ भेज दिया मैंने तुम्हें। कहाँ भेजा, किसमें भेजा? यार लेकिन बहुत क्रेजी लिख दिया यार आज विदित और ड्रैगन ने, अरे तो भाई मजा व्हाट्सएप आ पे। गया यार। व्हाट्सएप पे? चल साले बे. मैं इधर स्ट्रीम पे व्हाट्सएप खोलूंगा, पागल हो गया तू, इधर ही भेजना। अच्छा, अरे रुको, इधर इधर भेज देता हूँ यार, इधर भेज देता हूँ। अरे बहुत मजा आई ये यार पार्ट मुझे तो जरा अब ट्रिम इन कर लोग देना के। किंग्समैन भाई. ओके. क्यों ट्रिम क्यों करना है, सही तो है, क्या दिक्कत है, रॉ रखो, रख देना, रॉ एंड रियल। रख देना, कर क्या देना. दिक्कत है? हाँ। हाँ रॉ एंड रियल रहो यार, क्या कर रहे हो, इंटीग्रेट कर दिया रॉ मैंने। एंड कैची रियल, कैची वाला सिंबल दिखा दो यार स्ट्रीम पे. दैट्स व्हाट शी सेड, रॉ एंड रियल। भाव। कैची वाला कुछ हाँ और वो दिखा तेरा दो। काट के गई थी तब दिखाया था ना तुझे कैची वाला सिंबल. अरे ठीक है, ठीक। अरे ओके। बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है देखा। अरे क्योंकि मैसेज रिक्वेस्ट पे भी तुम्हें आया होगा कुछ, देखो ये किंग्समैन, देखो कुछ लोगों ने भेजा होगा शायद तुम्हें इसको। हाँ मैं चेक बड़ा करता हूँ, करना मैं चाहता चेक था करता हूँ, लेकिन डोंट फिर वरी। वो हो गया, क्या बोलते हैं, टाइम खत्म हो गया। अरे वाह, फक तो फक बढ़िया फक, ही लिखा पहला है वर्ड भाई। दिख आ गया गया मेरे आ को. गया, चलो बढ़िया बढ़िया। लाओ आ अरे गया चलो। बाप रे, कौन ओ पढ़ रहा है, कौन क्रेजी, पढ़ रहा चलो। है, थला थला पढ़ रहा है तू? ब्लैक। मैं मैं ही पढ़ दूं क्या? ठीक हाँ है, पढ़ पढ़ दे दे, पढ़ दे पढ़ो पढ़ दे, पढ़ो। पढ़ दे पढ़ 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 दे। पढ़. मेरी आवाज तो नहीं कट रही है ना? ना ना एकदम तगड़ी आ रही नहीं है। नहीं. चलो रेडी रेडी। रेडी। रेडी रेडी, पढ़ो पढ़ो। The black SUV went crashing into the birch tree, spinning wildly on the concrete road, almost faded into the dark, hazy night. The car's headlamps blinking wildly, as if trying to look for the road. My family's petrified screams faded by the loud screech of tires as the brakes failed to halt us to a stop. Everything went eerily silent as the hood of the car smashed into the tree. Crack! The dead bird's branch broke the silence as it came crashing down the driver's seat, smashing the windshield into a million pieces. Third, third, third. I could hear my mom banging on the third row door, signaling me to open the door. Third, third, third. I was strapped tight by the seatbelt, trembling with fear. Everything looked so blurry. Everything sounded so blurry. My clothes getting all sweaty. Third, 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 third. The construction noises from across the street woke me up. I was all drenched in sweat, gasping for breath. The same dream again. Raj, get down for get down here for breakfast. My mom exclaimed from the kitchen. Give me 10. The breakfast was pretty normal as always. Silent, both of us looking at our phone screens, pushing the food down our mouths. Ready for the appointment today? My mom broke the silence. Pretty much. Could have taken a shower. I did not. Take care. Try not to get too stressed. Will do. I am already stressed. 3 hours later, mostly I'm walking up the mostly empty street. The October sun shining calmly overhead, dried leaves rolling down. Dr. Tharoor lives in a secluded neighborhood. In fact, most of the town's elite live here, uphill.
It's my third visit to him. Weird, but a pretty chill guy. Could not say the same about his house though. Old red brick house with some stone cracks. Large, but mostly empty. Pretty dark Victorian aesthetic. Even looking at it now, from his grand driveway, gives me the creeps. Any nightmare last night? He calmly asked, notebook and a pencil in his hand, one leg over the other, sat on his leather chair. Nah, just the usual one. Well, I guess we are safe then, or at least someone is. Dr. Tharu looked at me with serious darting eyes, scrambling some stuff down his notebook. This is my fifth visit. This is my fifth time seeing Dr. Tharu. What did we talk about the other three times? Might have guessed it. My nightmares. Few weeks ago, I had one. I saw Priyanka, the senior from my college, folded up in a suitcase, dripping in water, bleeding, crying for help. The dream was about 3 days before the police found Priyanka in a suitcase flowing down the stream outside our town. Like 2 weeks ago, I had a dream about Lux. Lux was a close friend of mine ever since we moved into this town. He always used to tease me. Raj is such a generic name. The only reply I had was it was the first name that popped in my parents' mind. Me and Nidhi found him nailed on the blackboard Saturday evening. Yeah, both in my dream and 2 days later in the college. I described all this to Mr. Tharoor in like two initial meetings we had. He was calm, mostly, but also concerned. At the end of both meetings, he just wrote down stuff in his notebook and signaled me to leave. Never really spoke. The nightmare came last week too. This time, my English teacher. All this was really starting to get to my head. Dr. Tharoor scrambled some stuff down his notebook. Well, yeah, I forgot. There was another dream I had before the accident one. I sat back on the couch again and began telling him about the dream. Nightmare, I mean. There's this guy who goes to a shrink for an appointment in this new town. Things go south. There's a cut down tongue involved. You really don't remember dreams clearly, do you? Yeah. The shrink had a broken knee, tied down to a leather chair, stuff and stuff. I was describing all this to Mr. Tharoor as he kept scrambling down his notebook. Please let me go. बेचारा मिस्टर थरूर. अरे बाप रे बाप रे बाप. क्रेजी क्रेजी तुमने भाई साहब गजब गजब का वो बनाया भाई. ये तो तुमने नोटबुक. इसका नाम मैं रखोगे कह क्या? रहा हूँ भाई, एक बार ना डिटेल में डिस्कशन करेंगे, ठीक है, स्टोरीज के बारे में, क्योंकि मैं यस सब सुन नहीं पा रहे हैं बहुत सारे लोग. यस. अभी जब पढ़ रहे हैं ना, बाद में ये डिटेल बताओ में प्रॉपर ये सुनेंगे, ठीक है. कौन सा बातें प्रॉम्प्ट सारी था ये कौन रिलीज सा कर दी प्रॉम्प्ट था जाएंगी भाई, डोंट वरी, सब पब्लिकली रिलीज करेंगे. ये वो क्या था? कौन सा टॉपिक कौन प्रॉम्प्ट सा था था? कौन सा ये मैंने ना थोड़ा सा वो दो को मिक्स करने की कोशिश की थी एक तो मेटा कमेंट्री और एक वो जॉनर चेंजेस मिडवे हाँ, जॉनर चेंजेस. नाइस. जॉनर चेंजेस मिडवे हाँ ये तो हुआ भाई क्रेजी था ये बढ़िया तो बढ़िया भाई. ये तो बहुत सही था. शुरू में तो लग ही नहीं रहा था कि ऐसी एंडिंग होगी. मजा आ गया भाई. नाइस. गुड वन. वेरी गुड वन. थैंक यू चलो भाई किसका पढ़ना है कुल्ली भाई? काला अब तब सिनेस पाई से. का पढ़ते हैं. अब सिनेस पाई का पढ़ लेते हैं. आ जाओ. चलो. पढ़ लो चलो भाई. तूने तो एक्सेस दिया है ना साले. यहाँ पर भी मांगू. हाँ चल. तू ही अरे अरे पढ़ेगा ना. अरे अरे बाप रे, अरे नरेट अरे, करना. मैं पढ़ूं ग्राउंड रिपोर्ट आ गई भाई. ठीक है, अरे नरेट करना. चल. मैं पढ़ूं बढ़िया हाँ चल. है. डिफ चलो A few years after the Voldemort event, Hogwarts was being renovated, new students joined, and new teachers were being assigned to their respective positions. Some were leaving to live their life in the Muggle world. Time has changed so much after the passing of Professor Dumbledore. The curricular system of this wizard school was being reinvented for modern kids and unknown threats. In some cases, both were the two sides of a single Gallian coin. 29 January 2026, 8 a.m. 8 point क्या बोलेंगे इसे 8:03 AM. हाँ 8:03 a.m. ground floor corridors.
The school holidays were over. Harry Potter was late to his class. He was rushing through the crowded corridor as he bumped into Professor Ron. Hey, Harry, you are late again? Ron asked, as Harry ignores him and starts sprinting with some books and a wand and an owl in his hand. His clothes were all messed up, and pages of notes from his books were falling on the ground as he ran away. 8:07 a.m. Defense against dark art class. A girl stands up and answers a question. The Imperious Curse spell allows the caster to control the victim's action, Professor Ginny. You are absolutely right, Eleanor, Ginny said. But there's a big catch. You all need to be careful of when casting class. Harry shouts as he slams himself on the door while rushing into the class. I'm sorry. Pardon me for being late. Again. Thank you, Professor Ginny, for being there in my absence. He looks at Ginny with visible guilt on his face. Ginny was disappointed with him. So she took her wand and books. I will not be there to save you when Professor Horatio calls you, she murmured while leaving the class. Harry starts to teach the class. He picks up a chalk and starts writing a spell on the blackboard. While writing, he looks a little scared and he starts thinking about the last time he was called into Professor Horatio's office. This is the seventh time, Harry. Seventh time. I cannot let you test my limits again and again. I'm not Dumbledore. I'm not your father or Snape or anyone who will let you harm and destroy the decorum, the punctuality, or even the reputation of the school and the teachers of the school. You have done enough bravery and heroism. But that's all in the past. Voldemort is gone. And if you think that I will treat you like some kind of a hero and ignore your arrogance and disrespect towards the curriculum of the school just because you saved the school from Voldemort, then you are wrong. This is the time I'm letting you teach in this school. One more mistake and you will be out. Harry's life was in shambles and he was going through a tough phase. He had kids who needed nurture and teachings. He had a wife who needed love and time. He had his job at Hogwarts, which he wasn't really pursuing correctly. And he had something else going on privately, which in fact was the primary reason for all this. Why was he late? Why was Ginny disappointed? Why couldn't he give time to his priorities? What was he doing? Well, that's a story for another time. भाई ये तो द कर्स चाइल्ड की बढ़िया स्टोरी है भाई। भाई। ये तो कर्स द कर्स क्रेजी चाइल्ड की कौन सा? स्टोरी है भाई, मैं तो कहूंगा ये ऐसे अरे होना ये चाहिए बताओ, था। बढ़िया आप कौन में सा? से ये बताओ, होरेशियो को कौन कौन जानता है? मैं आई डोंट नो। सोचो, बोल एक भाई। कैरेक्टर है, हैरी पॉटर का एक कैरेक्टर है। वैसे आपको होरेशियो नहीं लिखना था, स्लगॉन लिखना, स्लगॉन है। चाइनीज है क्या वो अरे कैरेक्टर? होरेशियो का मीनिंग सर्च करना पता चलेगा। होरेशियो का अरे मतलब नहीं लेकिन पता। बहुत बढ़िया बट वो भाई। स्लगॉन को बोलते थे, स्लगॉन को कॉन्सेप्ट बुलाया कर, वो बुलाता था भाई, डम्बलडोर लेकिन ये बुलाया तो करता था बढ़िया बहुत है। बार। इसमें तो पता है, इसमें वो है कि मतलब एक टाइम का बहुत बढ़िया मतलब हीरोइक टाइप शिट किया था किसी ने, और फिर उसकी जिंदगी जब नॉर्मल और हो अब एक जाती है। नॉर्मल लाइफ हाँ, तो बढ़िया था भाई। ये तो मतलब अच्छा गेटिंग इनटू द पर्सपेक्टिव मिला नॉर्मल ये हैरी लाइफ। पॉटर की जिंदगी का। हाँ और ये सारे क्वेश्चन के आंसर बताऊँ वो मिलने क्या चाहिए कर थे। रहा था? बताऊँ वो क्या कर रहा था? वो डम्बलडोर को अपने मॉडर्न टाइम में भेज रहा था। हाँ, ए, यस, कनेक्शन बनाओ ए, बेटा। बढ़िया, ये बढ़िया था। नाइस वन, नाइस वन। चलो, अब किसका? अब मैं अपना पढ़ दूं क्या? अपना पढ़ दूं क्या मैं? हाँ, कर दो। अपना पढ़ देता हूँ अपना। ठीक है, चलो। हम्म, भाई देखो, मेरी राइटिंग बहुत खराब है, मतलब तुम लोग पढ़ तो नहीं पाओगे, पर मैं दिखाऊंगा और मैं अपने कोई मतलब बात नहीं, कॉपी से कोई पढ़ूंगा। बात। ठीक है, चलो। ठीक है। तो बेसिकली मैंने क्या किया, मैंने हेरा फेरी 3 की जो है एक स्क्रिप्ट लिखने की कोशिश करी है, एक छोटी सी कहानी। ठीक है, हम्म, इसमें क्या होगा कि इस टाइम हेरा फेरी होने वाली है प्रियदर्शन के कॉमेडी मल्टीवर्स की। ठीक है, जिसमें हम्म, कि ये सारे कैरेक्टर्स जो हैं एक ही यूनिवर्स में आने वाले हैं, जिसमें कि अपने भागम भाग का बंटी बाबला, ठीक है, हेरा फेरी के बाबू भैया, फिर ढोल का मारू, हेरा फेरी का एक कचरा सेठ और तोतला सेठ, और सुनील शेट्टी आएगा दे दनादन का जो राम है। ठीक है, हम्म, ओके। माय सो गॉड। यहाँ होता क्या है कि बाबू भैया की आंख खुलती है और वो देखते हैं कि अंधेरा हो गया है, जबकि सुबह होनी चाहिए थी। मतलब उनका अलार्म बजता है और देखते हैं वो 9 बज गई है,
लेकिन बाहर एकदम अंधेरा है। अब बाबू भैया बोलते हैं कि अरे देवा ये क्या हो रहा है रे बाबा, ये श्याम, ये राजू, किधर है रे? फिर इतने में भैंचो तो बाहर जाते हैं और देखते हैं कि अचानक से आसमान की छाती फट गई और एकदम एकदम से ऐसे क्रैक्स और एकदम से बिजली, और देखते हैं कि एक पृथ्वी उनकी पृथ्वी से टकराने आ रही है। और इसके बाद होता क्या ओके। है, और इसके बाद होता क्या है, एक अचानक से बूम, और एक बहुत बहुत ही ब्राइट वाइट लाइट आती है। और इस लाइट के बाद सब कुछ नॉर्मल सा लगने लग जाता है। ठीक है। और फिर ऐसे समझो कि बाबू भैया खड़े हैं और उनके पीछे से कुछ सामान वामान गिरने की आवाजें आ रही हैं। फिर बाबू भैया ऐसे पीछे जाते हैं और देखते क्या है, और सीन कट होता है और देखते क्या है कि वहां बंटी और बाबला लड़ रहे हैं। और बंटी और बाबला उनके गराज में लड़ रहे हैं, और वहां पर जो है वो मतलब ऐसे बाबू भैया जाते हैं और वो बोलते हैं, ए राजू किससे लड़ रहा है रे, ये चमाइला क्या कर रहा है रे तू, ऐसे करके। फिर उधर ही जो है बंटी बोलता है, ये सॉरी, हाँ, बाबला बोलता है, अबे साले अगर तूने वो बैग के साथ मतलब बैग दे दिया होता ना तो ये नहीं होता। और फिर ऐसे ऐसे वो लोग लड़ रहे होते हैं। और इतने में ही अचानक से ऐसे बंटी अलग होता है, बोलता है कि वो छोड़, ये हम हैं कहाँ? और फिर इतने में बाबला भी बोलता है कि अरे साला ये कौन सी जगह है? फिर इतने में बाबू भैया उनको ऐसे मिस्टीरियसली घूर रहे हैं अपने वो 10 10 के पावर के चश्मे से, जिसमें उनकी आंखें बड़ी बड़ी दिख रही हैं। फिर उसके बाद ऐसे बंटी उसको देखता है, बोलता है, अरे ये तो सेठ जी है। सेठ जी किधर थे आप? अरे, अरे हम गरीबों को छोड़ के कहाँ चले गए थे सेठ जी, ऐसे करके। ठीक है। उसके बाद अगला सीन, अगले में होता क्या है कि बाबू भैया उसको देखते हैं, बोलते हैं, ए राजू सालिया बंदूक किधर है रे? और इतना इतना बोलते ही फिर बंटी बोलता है, कौन सी बंदूक? अरे वो तो लाश पर ही फेंक दी थी मैंने। और ये क्या पहन रखा है आपने, आप अपना शो है ना आगे। फिर उसके बाद ऐसे बाबला बोलता है, अरे लेकिन हम हैं कहाँ? और इतने में भाई अचानक से एक बहुत ही ऐसे नाटा सा आदमी एक बड़ी कलरफुल सी शर्ट पहन करके ऐसे एंटर करता है, एक छोटे से स्मार्ट ग्लासेस वो लगा करके, सनग्लासेस। और वो है हमारा ढोल का राजपाल यादव। ठीक है। लगता है ये कहाँ आ गया मैं, ये क्या है, ये पक्या, ये गोटी, ऐसे चिल्लाते हुए। ठीक है। और वहां पर फिर बंटी उसको देखता है, बोलता है, ए वो देख गुल्लू टैक्सी ड्राइवर। और फिर वो बावला बोलता है, कौन गुल्लू? तो अरे टैक्सी ड्राइवर। फिर बाबा बोलता है, अरे गुल्लू साले, कहाँ था साले, हम तो तू हमें छोड़ करके भाग गया था तू उस दिन। फिर उसके बाद सीन आगे बढ़ता है, और सीन आगे बढ़ता है, फिर उसके बाद मारू बोलता है, अरे हट, वो ढोल कहाँ गया, क्या जुलूम है ये, मैं कोई गुल्लू उल्लू नहीं हूँ। और उसके बाद फिर बाबू भैया बोलते हैं, ये पप्पू तेरी बहन कैसी है? फिर मारू बोलता है, ये बुढ़ऊ मेरी कोई बहन नहीं है। और पप्पू कौन है? मैं मातंड हूँ। फिर उसके बाद बाबू भैया बोलते, चमाइला ये राजू राजू नहीं है, ये पप्पू पप्पू नहीं है, ये क्या हो रेला रे बाबा। फिर इतने में भाई सुनील शेट्टी अचानक से एंटर करता है, और अक्षय कुमार को दिखता है, बंटी को, और कहता है, ए साले नितिन, तू यहाँ छुपेला है साले, मैं तेरे को अक्खा सिंगापुर में ढूंढ रहा हूँ। और फिर इतने में बाबू भैया बोलते हैं, ये श्याम तू आ गया, ये राजू नहीं है, ये पप्पू नहीं है, ऐसे ऐसे करके। और इतने में फिर राम बोलता है, और मैं श्याम भी नहीं हूँ बुढ़ऊ, हट, ऐसे करके उसको हर साइड कर देता है। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर आगे के सीन में होता क्या है कि वो ऐसे बोलता है, यही अपना राम बोलता है, ये तूने मामू को पैसे लौटाए? और फिर इतने में बंटी बोलता है, कौन से पैसे, कैसे पैसे, मेरे पास कोई पैसे नहीं है, सेठ जी से मांगो। और फिर इतने में तोतला सेठ अचानक से ऐसे एंटर करते हैं, बोलता है, ये किधर है मेरा 20 लाख रुपया। और फिर उतने वो मतलब एंटर करते ही मारू को देखते हैं, और वो सोचते हैं कि ये पप्पू है। और मामू को ऐसे मतलब ऐसे मान लो ऐसे वो होता है ना, कॉलर से पकड़ करके ऐसे हिलाते हुए, किधर ले मेरा 20 लाख रुपया। इतने में मारू बोलता है, साले तोतले बुड्ढे, और उसको एक झापड़ मार देता है खींच के। इतने में बंटी और बाबला जो है वहां पर खड़े रहते हैं, वो बोलते हैं, ए देख देख देख, ये वो पुड़िया वाला है ना, पुड़िया पुड़िया, देख देख किसी ने पुड़िया दी थी हमको। और इतने में फिर बाबला बोलता है कि साला आज चंगुल में आया है, इसको नहीं छोड़ूंगा। और फिर वहां पर एक बड़ी केओटिक फाइट स्टार्ट हो जाती है। और इस पूरे फाइट के लास्ट में अचानक से एक फाइनल बॉस एंटर करता है, जो कि है हमारे प्रियदर्शन साहब। अब वो आते हैं, वो वहाँ बोलते हैं कि अरे तुम सब अपने अपने यूनिवर्स से भाग करके यहाँ आ गए। और उनको समझाते हैं कि ऐसा मल्टीवर्सल इवेंट हुआ था कि, समझ रहे हो ना, थोड़ा टाइम रन आउट हो जाता है अचानक से। और फिर वो बोलते हैं कि चलो मैं तुम लोगों को अपने अपनी टाइमलाइन पे भेजता हूँ। और वो एक बटन दबाते हैं और बूम, सब कुछ दोबारा से वैसे ही रीसेट हो जाता है। और लास्ट में बाबू राव दोबारा उसी जगह पर उठता है जहां पर वो सबसे पहले उठा था, और उसको लगता है ये सब सपना था।
और बोलता है ये क्या हेरा फेरी हो रही है रे बाबा, मल्टीवर्सल हेरा फेरी। ये थी भाई मेरी हेरा फेरी 3 की छोटी सी कहानी। मास्टरपीस भाई, एब्सोल्यूट लॉर्ड इट सिनेमा, भाई बना दिया यार। एब्सोल्यूट सिनेमा भाई, Absolute cinema भाई, मस्त एकदम। सिनेमा। मजा आया। ये मूवी बननी चाहिए, ऐसी मूवी बननी चाहिए, ऐसी मूवी देखनी है, मुझे भी देखनी है ऐसी मूवी। इनकर्जन हो गया हमारा, चल रहा मेरी। इनकर्जन कर दिया भाई मैंने हेरा फेरी का। मैं पता है मैं बहुत दिनों से सोच रहा था इस बारे में। बढ़िया हुआ अरे मैंने कुछ लिखा नहीं भाई, इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स हो रहा है मुझे यहाँ पे भाई। अरे भेज दी अरे तुमको इसमें, मैंने देख लेना। ओके ओके, भेज दिया क्या आपने? नाइस, चलो बढ़िया। Damn, bro. अच्छा चलो चलो, नेक्स्ट किसका पढ़ना है? नेक्स्ट किसका पढ़ना पुर्तगाली का पढ़ो भाई, मैसेज पुर्तगाली का रिक्वेस्ट में पढ़ो। देखो पहले किसी ने क्या-क्या भेजा और किसने किसने क्या-क्या भेजा है? है। मैसेज रिक्वेस्ट, ओके यहाँ मैसेज रिक्वेस्ट यस। 5 कुछ डेज नहीं, 30 डेज अगो है ये ये तो नया नहीं है कुछ कुछ। नहीं, कुछ नहीं हटाओ कुछ नहीं। अरे हाँ, पुर्तगाली का पढ़ो ना। हाँ अब रोहित अब लेकिन केतन भी है, केतन ने पहले भेज दिया था। केतन का पढ़ दें क्या? ओके, पढ़ लो, किसी का पढ़ भी दो पढ़ पढ़ लो दो। यार। तुम तो केतन का पढ़ चलो दो। केतन केतन का भाई तू पढ़ते पढ़ हैं। भाई खुद। अरे केतन भाई तू चैट पढ़। में लिख दिया। केतन चल पढ़। बहुत छोटा अरे है। हेल नो ब्रो, मैं पढ़ नहीं पढ़। अरे पढ़ पढ़ ना पढ़ साले, पढ़ पढ़। पढ़। अबे तू चल पढ़, पढ़। पढ़ के सुना। अरे पढ़ देना, पढ़ दे। छोटा सा तो है, पढ़। अरे नहीं, नहीं, पढ़ 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 पढ़, फटाफट पढ़। ए लौड़िया। चल विदित तू पढ़ दे। ऐसे पढ़वाओगे क्या? हाँ चलो हाँ मैं पढ़। पढ़ता हूँ। हाँ चलो। This is a story of a guy named Roy. Roy was a hardworking guy, grinding every day and night to achieve what he wanted to. Roy wanted to make his parents and younger brother proud. One day, Roy was busy studying and he forgot to analyze his past year paper before appearing for the exam. But he was going through every chapter one thing at a time. And he was so busy in that with red eyes and foggy brains that he fell asleep. Randomly, he woke up in the middle of the night and continued from the page which was in front of him and acted as if nothing happened. On result, he got to know that he was cleared with such difficult exam and his parents were proud of him. Lesser did he know, his younger brother Arun, who was so happy for him, was the real reason for Roy's passing in exam. Aaron supposedly turned pages of Roy's book to important chapter which Roy couldn't get even if he would study the whole night. Aaron did his own analysis for Roy's exam. Their parents used to give example of Roy's to Aaron that this is what you should become, but only Aaron knew what he was doing for his family. This was one of the many instances where Aaron saved his family by doing things which no one ever knew. This is what Aaron was to his family, an angel working in shadows, a force drifting in blind spot. And despite they love or hate him, he was always there for his family. Aaron knew he was a side character, but his hidden helping hand, or I say, a dark knight. आई लव यू नाइस। यूट्रॉक्स, आई लव यू वाओ यूट्रॉक्स भाई, आई यार। लव यू क्या भाई। लिखा है भाई, क्या ये तो कोई बढ़िया लिखा है। चाइल्डहुड यूट्रॉक्स आई लव यू भाई। थैंक यू, थैंक यू। बहुत बढ़िया। मजा आ गया भाई, मजा आ गया। थैंक यू, वाह, थैंक यू। मतलब अच्छा था यार, मतलब एक साइड कैरेक्टर को पता हो कि वो साइड कैरेक्टर है। नाइस नाइस, बढ़िया है भाई, वेरी नाइस। गुड। अरे हाँ, गुल्लक वाली खिला रही थी भाई। हाँ ना, है ना, बड़ी बड़ी मतलब ऐसे होलसम सी और बड़ी फील गुड वाइब्स थी ऐसे। हाँ यस यस। नाइस नाइस, चलो अब मतलब छोटे रोहित भाई भाई ने का मदद टर्न। की है क्या उसकी पढ़ाने में? यस सर। नाइस, चलो अरे अब बहुत रोहित। बढ़िया है। सारे, बहुत सारे अब रोहित एग्जांपल्स लिखते हैं? What the hell? ठीक है, Oh hell no, nigga. ठीक है, Oh hell no. ओके ओके, कोई बात नहीं। आई गेस जीसस भाई की बारी। जीसस भाई, ओके, ये आपने दो दो भेजा है, कौन सा? पढ़ना है क्या पहले वाला भाई, बताओ। आप जो बोलो यार, मतलब जिसको जो आप पढ़ना चाहते ये हो। कुछ चेंजेस है इसमें, सेम चीज सेकंड है। पढ़ो, सेकंड वाला पढ़ो यार। हाँ मेरे को एक नाम से लग रहा है वो ये तो वो है। सेकंड वाला पढ़ते हैं, पहला वाला तो पढ़ ब्लैक रखा है। गोल्ड हैं। है? ब्लैक डोल। पढ़ो पढ़ो भाई, मैं नहीं पढ़ रहा, तुम पढ़ो, अरे तुम्हारे आप ही काम की चीज पढ़ोगे है। यार, कम ऑन अरे नहीं भाई, सिंपल है, भाई। सिंपल है। अरे भाई क्या आपसे ज्यादा अच्छी नरेशन और कोई नहीं करता, चलो आ जाओ। अरे नहीं भाई, भाई पढ़ो प्लीज, कम आराम ऑन, से पढ़ो, कोई दिक्कत कम नहीं है। ऑन, कम अरे आराम ऑन। से पढ़ो, आराम से पढ़ो। अरे अरे नहीं, मैं नहीं अरे पढ़ आप ही मुझे पढ़ रहा। सकते साहिल हो भाई, से पूरा सीखना है। इसमें तो गांड फट जाएगी साहिल मेरी से पढ़ने में, पढ़ो भाई। अरे नहीं भाई, अरे आराम से पढ़ो ना, सिंपल ही तो है। अच्छा चलो, मैं पढ़ दूं क्या? हाँ, थला थला पड़ेगा, चलो। हाँ,
अबे ये साहिल सिंह ठीक है, ठीक है। मोनोक। ये तो बढ़िया लग रहा है। साहिल सिंह साइलेंस भाई चुप हो, साइलेंस स्पॉइलर मत दो यार, स्पॉइल मत करो, पढ़ो। अरे अरे पहली अरे लाइन ही अरे पढ़ी पहली लाइन है भाई। पढ़ो 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 भाई। पढ़ो रेडी पढ़ो, रेडी। इंटरेस्टिंग लग रहा है, पढ़ो पढ़ो। His rubies, the black world. The story starts with an evil incel scientist named Sahil Singh Modoc. He saw a girl one day and named Purta, which made him fall in love with him instantly. One day he gathered some courage and made his mind to confess his love to her. He approached her and with wholeheartedly he said, "हम तो का बहुत प्रेम करा था, तो का संग बिया करल बानी." He then gave her a nice flower bouquet to her, but the girl had different plans. She said, "छी, बिहारी और वो भी साइंस वाला, hell ना मैन, इससे अच्छा तो मैं चार लोगों से अपनी बनवा लूं." Her words broke her words broke his heart into 1,000 pieces. जादू से शरीर में 100 ग्राम का हार्ट का टूटना बहुत आयरन इन शिट है, I know. It was like a physical blow to him. अरे बे, अरे वो रुको यार, ऊपर तो है ना. That day he made a promise. He thought, ये बकलौड़ी दुनिया जात ही नीची जात वाली जेंडर होती है. He swore that he will turn every girl in this world into an Hizru boy. He rushed in, he rushed to his lab with a lust of revenge, not in a mohalla level, but in a global level. Formulated a virus capable to turn any woman into a Hizru boy. Hizru boy. His first test subject was a rat named Pushpendri, a, fe- a female rat. When he injected a virus into it, initially it did nothing, but suddenly the rat turned into a Hizru rat. His virus was showing positive signs, which gave him hope, which gave him hope to show his creation to the world. One night, he planned he planned to launch those virus containers to the sky with the Diwali rockets. Cause bitch ain't got no money, so he रे Chris to hire हीरे, to हीरे hire क्रिश। Chris to run over those to hire Chris to run over those buildings and plant the virus rockets. बढ़िया। He launched those rockets to the sky. They blasted. The virus took over the females. They started to turn into the Hijru boys, but sometimes later they tried to turn into zombies, more like a mixture, which in turn turned them into his rubies. rupees. The female zombies rushed to kill the males on the street. They started chewing off the dicks, which made them die. In a time, a zombie walks in a very strange way towards Sahil. When Sahil saw her, it was zombified Purta. In a very Hijru dialect, she says, "हम तो हाल थोड़ा खरीदे." अरे बाप रे। When when he heard those words, Sahil made that "chinging dog meme face, and then Purta consumes him and he dies. The world went into chaos. 3 months later, the world is into ruins. The men all gone. Only two men remains in this world. One is Arman Chaudhary, a guy who always had only one wish: to smash a fine app UC and not die a virgin. The only guy from his pin who remains bitchless. And another one is Pramod, a black, like hella black guy. And why he is still alive, surrounded by zombies, explains a lot. काले लोगों को फुर्ती नसीब ना होना सी. Only these two lone survivors are now alive, looking at each other. One day, Arman and Pramod were doing their daily supply scavenging run, which includes finding food, water, and the other useful things for survival. Arman says, "यार जीसो." Whoops. प्रमोद भाई, बड़े दिन हो गए यार कि zombie ने खुद ही नहीं मारी. क्या बोल रहे हो?
चले क्या बगल वाले पिंड में, वहां कुछ बुद्धि मिल जाए। Pramod says, we don't have ammo right now. Last time we went for a scavenge run, we got swarmed by a big Bengali zombie. Oh, our day. We stumble upon the same thing again. We'll die and no coming back. But Arman insisted to go and see whatever will happen, we will manage. The two went for the hunt. Arman was holding some supplies like backup water and food, and was with a torch and machete. Arman was so into mood that whatever the lady zombie will encounter, he will fluke it in there. Suddenly, a horde of see-through zombies came from the nearby building, smelling Arman's deodorant. Pramod got angry and said, "अबे बढ़ गया साले, यहाँ यहाँ भी तेरे को सहेली बनानी है क्या? बावला हो गया है क्या बे? मरवाएगा आज तू." Arman says, "My time has come, Pramod bhai." The zombies tried to rush towards us. They both started to run. Af- After running, Pramod suddenly stumbled upon and fell, and the zombies were like 2 feet away from Pramod to chew his dick off. Pramod made that "Mera khel khatam hai dog" meme face. But surprisingly, the zombies completely ignored Pramod and went towards Arman बाप because Pramod was so black that the virus made the vision of the mutated zombies to repel back color, which made Pramod kind of invisible, Void. invincible, प्रमोद invincible. void है। Like I said earlier, for Pramod, it explains a lot. Pramod said in surprise, "Hey man, you nice." The zombie horde slowly moves towards Arman. Pramod quickly collected himself and ran towards Arman to save him and escape that place. They both started running. They saw a fire truck was visible in a distance. They both rushed towards it. They both went inside the truck to give it a start and escape the place. Heavy metal music plays in the background. Pramod started looking for the keys. He says, "Chabi, chabi kahan hai? Chabi kahan hai?" Screams angrily. "कान में डालने हो क्या चाबी?" Arman went down to Pramod pants and started opening the dashboard for the truck to tinker the wires and head start the truck. But the zombies reached the truck. They all started jumping on the truck to try to open the hatch and doors of the truck to consume Arman. Heavy metal music intensified in the climax. Both started screaming in fear. Arman screamed, "Ah!" Pramod screamed, "Ah!" in anger and hit the gas pedal with all his might. One zombie also screamed, and hits its head on the glass, which decapitated its head and went straight to Arman's hands. Arman again screamed in fear, "Ah!" While driving, Pramod says, "मिल गई ना खुद्दी, let down every girl." Arman shoots the head outside the truck. They luckily escaped the place, while his ruby slowly chased the truck, while as it went away into the Canadian skyline. Yeah. अबे यार क्या ये तो बहुत ही एपिक शिट थी भाई, ये तो बहुत एपिक था भाई। This was the best. भाई क्या बढ़िया ये सबसे बेस्ट इंटीग्रेशन था। था भाई, क्या बढ़िया इंटीग्रेशन था, नो मजा आ जोक, गया। ग्रेटेस्ट भाई, क्या मजा आ गया। Greatest. यार बड़ी कॉप मजा मूवी आ बन गया, सकती है भाई, इसको तो जल्दी भाई। है ना, मजा आ जाए भाई, क्या बड़ी गजब कॉप बना मूवी है भाई ये तो। एक्सटेंडेड वर्जन निकालो इसका, मुझे पूरा देखना है। भाई ये एक्चुअली फनी है भाई। हाँ, बढ़िया। भाई पीक है तो पीक। अबे अब पढ़ने अब में भी मैं था ना रेवेन्यू वो फॉर कॉम्प्लेक्स। होड होड और वो सब बढ़िया लिखा था, पढ़ने के हाँ, लिए ही बन रखा अब है। गूकी भाई की बारी। Oh my god, I have to prepare. Lost song in the I'll have dark. to narrate this I myself, just need some time. तो गुकी भाई आप Okay, बोलने okay. को तैयार हो अभी? बोल पाओगे? hmm. मतलब आप डीएम में ही लिख दो मेरे, अगर आप बोल पाओगे तो, या फिर अगर आपको नहीं बोल समय पाओगे चाहिए तो तो यही बताओ, बोल दो ना। अबे हम बोल लोग किसी पाओगे और तो का बोल के अरे बोल मान पाओगे तो यही बोल दो ना यार। मतलब वही है। एक बोल मिनट पाओगे तो ठीक लिख है भाई, दो। 1 मिनट रुकेंगे आपके लिए भाई, तब तक थोड़ा पर थोड़ा मुझे ये ब्रेक लेते हैं, थोड़ा एनिमे सोचते चाहिए हैं, बात भाई। करते हैं। मुझे ये एनिमे मूवी चाहिए भाई, ये वाली जी सॉस की। Yes, जीजू yes, बोई। yes.
फंड करो अरे इसे। यार मजा आ गया। ₹20 पे तो वर्क होगा जी जीसस भाई। वो मैं हम्म, आईपी राइट्स ले रहा हूँ आपसे, ठीक है, मूवी डेड राइट्स में ले रहा हूँ, हिजरू, डेड ठीक हिजरू। है, साइन कर लेना कॉन्ट्रैक्ट मेरे से। पर बढ़िया यार, मतलब स्टार्ट मस्त की भाई इन्होंने एक्सक्लूसिव के राइट्स चाहिए पीओवी मुझे, से। आधे घंटे में लिखी भाई, एक्सक्लूसिव थैंक यू। पर फिर साहिल बैंड का जो तो खत्म कहा, एक्सक्लूसिव अरे राइट्स भाई चाहिए मुझे। मजा आ गया। साहिल का तो लौड़ा कट गया पर वो भी काटा किसने? वो भी वो पुरता। भी पुरता। ओए नहीं, कुत्ता। शांत, कुछ नहीं बोल सकते, शांत। अरे अरे हम तो कहानी अरे में मजा ले रहे हैं यार, यस, मतलब अच्छी कहानी थी, हमको मजा नो, आया। क्यों कुछ नहीं कुछ बोल नहीं बोल सकते, सकते, क्या हो मतलब गया? हम मतलब क्या मजाक कुछ नहीं नहीं। उड़ा रहे मतलब कहानी अरे का, यार, बुराई, नो कहानी बुराई, बढ़िया नो, थी। नो बुराई। अरे सुनो सुनो, मैं क्या कहते हैं, मतलब एक सपना आया था मेरे को 2-3 दिन पहले, महफिल मेंबर से हाँ तो लिख रिलेटेड। के भेज। हम्म, लिख के भेजो, लिख लिख के। जा लिखा, अब मतलब जा छोटा जा सा ही लिख है, लिख कोई के ज्यादा भेजो। बड़ा नहीं ना है। ना ना लिख ना, के लिख के भेज, लिख भेजो, के लिख भेज, के, लिख लिख के के या भेज भेजो। तो अपना लिख के भेज पर्सनल। दो, या फिर कल उसकी ड्राइंग बना देना, या फिर कल उसको गाना गा देना ओपन माइक में। हाँ बेस्ट अरे है, या तो ड्राइंग उसका एक काम कर, ड्राइंग उसको मत लिख बता ले देना। और फिर उसका गाना बनवा ले सुनो से, और फिर उसको गा दे परसों। हाँ, अबे तो सुनो ही गा देगा ना, ये क्यों गाएगा? अरे भोसड़ी। पर अरे पर ये बताओ किंग्समैन भाई, जीसस भाई, हाँ, क्या मैं अच्छा हम्म, कंटेंडर हूँ कॉमिक नरेशन के लिए? क्या तुम यस, अच्छे कंटेंडर हो किसके लिए? कॉमिक नरेशन के लिए। हाँ हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल, बस तुम थोड़ी भारी यस, आवाज नहीं निकाल पाते हो यार। हाँ, वो जो आइसक्रीम आ वाली थी वो थोड़ा हाँ भाई वो जो हाँ पूरा हाँ। आ अरे और वो मैं बढ़िया था, और लेकिन वो बढ़िया था, घर पे भी हूँ ना मैं, बड़ा मजा आया। लोगों अपने से अंदर का सराउंडेड हूँ। अमिताभ बच्चन बाहर लाओ आप। थोड़ा सेड्यूसिंग आया था वो। अरे तेरी माँ का बढ़िया था, बढ़िया था। चलो ओह, गुकी भाई, 1 मिनट हुआ, थोड़ा मतलब अगर अरे चलो मैं, अरे आप लोग फिर गूकी मजा आ जाएगा भाई, बुकी भाई पढ़ेंगे तो मजा करने ही का आ जाएगा भाई। हाँ भाई गुकी भाई ये पढ़ेंगे तो भाई, वंस इन कुछ अ लाइफ सोचो, टाइम इवेंट गुकी हो भाई गया भाई। माइक खोलेंगे, गुकी भाई माइक यस। खोलेंगे भाई। पथ प्रदर्शित होंगे भाई प्रभु के। यार तब तक मैं सपना सुना दूं क्या कुकी भाई? अब चुप सुनाओ यार रहने दे, जल्दी। तू नहीं, लिख के दे। लिखना पड़ेगा तुझे। नहीं नहीं तो लिख लिखना। बहुत लिख के लिख छोटा ला। सा है, लिख बैक बिल्कुल कर जो देगा। छोटा सा लिखो, होता है ना। लिख कर दो, हाँ लिख लिख के दे, कर दो, एक लिख पैराग्राफ कर का दो। होगा, लिख करके दे। लिख के आना, साइन स्टैम्प हाँ, करके आना जाए। अरे गुकी भाई मजाक का नहीं, माइक सेटअप कर मजाक रहे हैं क्या? हाँ यार गुकी भाई मतलब मजाक क्या। मजाक ना उड़ाने की ट्रीटी उनकी, मजाक ना उड़ाने की ट्रीटी उनके लिए जिन्होंने लिख के दिया है नाइटविंग भाई। हाँ तो अच्छा, आप तो रेडियस में आ जाओगे। एक नॉर्मल, अच्छा लिख बोल क्यों रहा हूँ? यही हमने बाउंड्री सेट कर दी है। Another boundary. बढ़िया। अबे गूकी क्या कर रहा है? साउंड इफेक्ट सेट कर रहा है। गुकी सब भाई सब पैराडीज प्रॉपर। आइसलैंड है भाई, ये पैराडीज आइसलैंड है, क्या कहते हैं वो इसे? अपने वो अपने रोड वाले माइक्रोफोन लगा के आएंगे भाई, बिल्कुल हाई क्वालिटी, और गेस भी आवाज में बोलेंगे। सारे साउंड इफेक्ट। ड्राइंग नहीं के लिए कोई प्रॉम्प्ट है क्या, नहीं या नहीं, फिर अपन कुछ भी बना सकते हैं? कुछ भी कुछ भी। ऑडियो बुक आएगी, ऑडियो बुक। अरे वो गुक्की भाई पब्लिश कराने गए हैं, अरे बुक हाँ, पता बुक नहीं में से चल रहा रिलीज हाँ, भाई, होने वो गए हैं। वन अरे वन एट्टी सिक्स पेंगुइन से केबी का करवाने है गए हैं यार। पब्लिश। अरे तुम ये कुकी सोचो, में बोले ये पहले 186 कॉपीराइट केबी आ का रहा है, है। मतलब समझ रहे हो कितने पन्ने हैं, कम से कम 5 पन्ने है ये। बाप रे। मजा आएगी। खोला है इसको? खोल के देखो एक बार कितने बनने। अरे स्पॉइल नहीं हो नहीं नहीं। जाएंगे ना यार, इसलिए तो नहीं खोल रहा। ओके 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 ओके। अरे फटाक से खोल, हेलो, पन्ने देख, बंद आ कर दे। गए गुकी भाई आ गए। अबे इधर ही थे। लेट्स गो लेट्स गो। लेट्स गो ऑलराइट, आई ये मीन, चलो सब लोग चुप हो जाओ भाई, गुकी भाई आई ऐसे एम थोड़ा आराम सीटेड। से बोलते हैं। चलो सब शांत हो जाओ, सब चुप हो। सब चुप हो जाओ बिल्कुल ही एकदम। हेलो महफिल, कैसे हो आप सब हाँ लोग? हाँ, सबसे पहले ये बताओ। बढ़िया अरे बढ़िया भाई, एक बढ़िया। नंबर यार। यार ग्रेट ब्रदर। हेलो पूरी ऑडियंस को भी। सो पहले मैं कुछ चीज़ें क्लियर कर देता हूँ अपनी स्टोरी के बारे में, आई थिंक ठीक रहेगा। सो बाउंड्री बाउंड्री सेट करो। सो मेरी स्टोरी का नाम है द लास्ट सॉन्ग इन द डार्क। सो ये लियू शिन की रिमेम्बरेंस ऑफ द अर्थ पास्ट ट्रिलॉजी से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है। अगर आपको डार्क फॉरेस्ट या वॉल फेसर्स के बारे में पता है, सो यू विल अंडरस्टैंड द वाई। So it's basically a short version of my full short story, if it makes sense. So मैं आपको ओके इस ओके। स्टोरी का बेसिकली कोर देना चाहता हूँ. So sit back and feel the mood. Okay, here we go. The world ended not with a bang, but with a held breath. 10 years ago, the quiet arrived. They were massive, silent black blocks that
hung in the sky like giant tombstones. They didn't use guns or bombs, they listened. They fed on the noise of human life, the energy of feelings, a loud laugh, a bitter fight, or the deep ache of love acted like a flare in the dark. If they heard your heart racing, you were erased. You simply ceased to exist, leaving behind nothing but a perfect, empty silence. I am Gookie, and in the old world, I was a man of logic and math. I didn't believe in souls, I believed in data. When the world went quiet, the leaders of the remaining humans called me to a secret bunker. They were desperate. They asked me what I needed to stop the quiet. I leaned over the table. My voice was cold and very demanding. I didn't tell them why. I didn't tell them what I planned to do with her. I just gave them a description of a girl that sounded like a dream or a ghost. I need a girl, but not just any girl. She must be a masterpiece of human emotion. I want her to be like a character from an old book, pure, innocent, and full of life. She needs to have eyes that looks like they've seen 1,000 sunsets and still find them beautiful. She must be the kind of person who finds magic in a raindrop or a broken string. I want her to be fragile, but capable of a love so deep it would frighten a normal man. She shouldn't just be pretty, she should be a perfect she should be perfect in her spirit. I want a girl whose soul is a bright singing light in this grey world. Find her. If she isn't this exact frequency, the math won't work. So they found her. Her name was Anya. She was exactly what I asked for, a living miracle. We were sent to a villa on a high cliff far from the silent cities. For 5 years, I played the part of the perfect man. Okay. There's a slight mistake. I think मैंने uh, unfinished version उठा लिया है. Okay, I think it's fine. Sorry, very sorry for this. Okay, I need a girl, but not just any girl. She must be a masterpiece of human emotion. I want her to be like a character from an old book, pure, innocent, and full of life. She needs to have eyes that look like they've seen 1,000 sunsets and still find them beautiful. She must be the kind of person who finds magic in a raindrop or a broken string. I want her to be fragile, but capable of a love so deep it would frighten a normal man. She shouldn't just be pretty, she should be perfect in her spirit. I want a girl whose soul is a bright singing light in this grey world. Find her. If she isn't this exact frequency, well, the math won't work. So they found her. Her name was Anya. She was exactly what I asked for, a living miracle. We were sent to a villa on a high cliff far from the silent cities. For 5 years, I played the part of the perfect man. I had my guitar. I learned which chords made her eyes bright and which whispers made her feel safe. I mapped out her mind like a piece of land I intended to be mine. She was my universe, or so I made her believe. We lived in a world of soft touches. We talked about things that were gone, the smell of rain on the dusty streets of Delhi, the crowded markets, feeling of a song played at full volume. Cookie, she whispered one night under a sky full of cold stars, do you think the universe is lonely? I think it's a song that hasn't been sung yet, and I think we are the only ones who remember the tune. I said, the stars are just burning gas, Anya, that I would say, keeping my mask on. They don't feel. That's why the shapes let them stay. They are clean. Only humans are noisy because we feel too much. Well, I don't care about the math, she said, leaning her head on my shoulder. I feel the music in everything, especially in you. Well, I felt nothing. I was just checking the clock. I spent 5 years making her love me with a terrifying intensity. I was the architect of her happiness, building her up higher and higher.
waiting for the sky to change. So on a Tuesday, the sky turned the color of a bruise. The black blocks began to descend. They were coming to wipe out the last of us. Googie, they're here. Anya gasped. Her hand was shaking as she reached for mine. Is the plan ready? How do we hide? I stood up. I didn't take her hand. For the first time in 5 years, I didn't play a soft melody. I smashed my hand across the guitar strings, creating a harsh, ugly noise. The plan is ready, Anya, I said. My voice wasn't a whisper anymore. It was loud and it was cruel. She flinched. Stop. You're making too much noise. They'll find us. Well, they've already found us, I said, stepping toward her. Let the coldness finally show in my eyes. So they're here, but they don't want me. My mind is quiet. I don't feel a thing for you. I never did. I'm a zero to them. But you are the weapon. I leaned in, watching her face pale. I kept on continuing. I didn't choose you because I loved you. I chose you because I needed someone who could be destroyed. I spent 5 years building a love so deep that your whole life depends on me. I turned your soul into a bomb. What? What are you saying? She whispered. The first tear fell. The quiet feeds on feelings, I explained. My voice was like ice, but they have a limit. They can't handle total chaos, and there is nothing more chaotic than the sudden violent shattering of a human heart. When you realize that every kiss and every word and every song for the last 5 years was a lie, the noise of your heartbreak will be so powerful it will blow their senses apart. Your pain is the only thing loud enough to kill them. Anya didn't scream. She just looked at me. I saw the song she believed in die in her eyes. It was like watching the light go out in a dark room. You're not a man, she whispered. Her voice cracked like thin ice. You're just a machine that learned how to mimic a heartbeat. The black blocks hit the cliff. The ground groaned. They were reaching for her, drawn to the blinding white hot pain of her realization. She was a son of pure agony. I walked out of the villa, leaving her standing alone in the center of the light. Behind me, there was a flash, not of fire, but of pure energy. A massive, silent explosion of feeling. The noise of a broken heart hit the shapes, and for the first time in the history, the quiet failed. The giant black blocks didn't explode, they unraveled. They couldn't understand the depth of her betrayal. Their logic crumbled under the weight of a single shattered human soul. They turned into black dust and blew away in the wind. The world is loud now. The quiet is gone. In the distance, I can hear people shouting and crying with joy. The war is over. I am the man who saved the world, but I am the only one who knows the price. I sat on the beach today with my guitar. The strings are rusty and the wood is cold. I looked out at the ocean, thinking that I used love, the thing I called useless data, as the only weapon that could win. I proved that her miracles were real, and then I murdered one to save everyone else. I didn't write my name on the wood. I didn't want any record of who I was or the crime I committed. I just sat there in the dark, the only place where the silence still exists. I picked up the guitar and played one single soft note, and it wasn't to save the world, it was a note of pure, honest regret. A sound that had no purpose and no logic and no math behind it. It was a song for a girl who wasn't there to hear it. It was the last song in the dark, and for the first time in my life, I finally understood the music.
Thank you, everyone. This is it. वाह भाई डैम ब्रो। देखो वाह मैंने अब मतलब अपना पूरा लिख तो लिया, पर गुकी भाई ने जो कर दिया, अब शर्म आ रही है ये प्रेजेंट स्टैंडिंग करने में। आई स्टैंडिंग लव यू ओवेशन बुकी भाई, आई ट्रूली लव यू। Same to you, Jesus bhai. I love everyone here. भाई आज तो ओहो भाई, पीक ही पीक देखने को मिल रहा है भाई, पीक ही पीक। वाह क्या बढ़िया है Thank you guys. यार मत Same किया to you. करो यार बुकी भाई, ऐसा मत तड़पाया करो यार, क्या। अरे मुझे बहुत अच्छा लगा, आपको आप लोगों को मजा आया सुनने में। तो जैसे मैंने बताया, दिस इज अ शॉर्ट वर्जन ऑफ अ शॉर्ट स्टोरी बेसिकली। सो व्हेन इट गेट्स कंप्लीटेड मैं शेयर करूंगा आप सबके साथ द यार फुल स्टोरी ऑफ। ओ भाई मैं नहीं दिखा रहा भाई अपना। वेट करेंगे कि वेट म्यूजिकल करेंगे था भाई, यार लिटरली ये म्यूजिकल था। अरे भाई बहुत बढ़िया था भाई, मतलब मैं साइड साइड लिख रहा था, मैं लिखना बंद कर दिया। मैंने कहा रुको। ओह भाई, दुखी भाई, सब भाई यार। ओरे मादर, किसका कहीं ये? तो आप सही दिख रिची अरे गाइड भाई लेट्स गो। अरे इसका कोई नरेटर बनो। फिर बाकी सब कहाँ चले गए? अरे प्रमोद भाई पढ़ दो इनका। अरे कौन पढ़ रहा है? पढ़ मैं दो पढ़ दूं क्या? मैं पढ़ दूं? पढ़ पढ़ दो दो पढ़ पढ़ दो दो। चलो मैं पढ़ देता हूँ। I didn't plan to write this at the last moment. That would imply intention. What actually happened is that time moved faster than my motivation. And now, here we are. Me, this document, and you, the unfortunate witness. If this piece feels slightly unhinged, that's because it was born in panic, like a baby giraffe that immediately has to run. This was supposed to be a well thought out creative submission, something symbolic, something layered, something that people would analyze and say, ah, yes, this represents the duality of human existence. Instead, it represents the duality of me, knowing I had to write, and me absolutely not writing. And now, because the deadline is approaching at the speed of light, which, fun fact, is faster when you are procrastinating, I have decided to lean into the only genre that makes sense, pretending that this chaos is intentional. Officially, this is science fiction. Unofficially, it's a documentary. The future part comes from the fact that I am writing from a few minutes ahead of my own regret. Somewhere in the near future, I will reread रहा। this and think, wow, I really submitted that. But right now, in the present, I am fueled by adrenaline and the belief that, that confidence can replace planning. Sometimes it does. Don't fact check that. Let's break the fourth wall immediately because subtlety requires preparation. Okay, requires preparation. You are reading this thinking this person definitely started late, and you are correct. Congratulations, you have unlocked the hidden theme of the piece. I considered lying and saying this was a deliberate stylistic choice, but honesty is funnier, and also I don't have time to maintain a lie for 1,000 words. At some point, even every writer likes to believe that inspiration will descend dramatically, like a divine notification. In reality, inspiration shows up only after fear arrives first and kicks the door down. Fear says, you are running out of time, and inspiration says, fine, but we are doing comedy because nothing else will survive this. If this were a traditional story, this is where it would introduce a protagonist. But since I didn't plan one, the protagonist is me, or you, or the word count bar slowly filling up like a video game health meter. Except instead of health, it measures how close I am to freedom. Right now, it's doing okay. Don't jinx it. I know what you are wondering. Is this allowed?
Probably this is creative. I'm going to say yes very confidently and move on. Confidence is important. If you say something boldly enough, people assume you meant it. That's not just writing advice, that's life advice and possibly terrible legal advice. Somewhere, a serious writer is crafting metaphors with care. Meanwhile, I'm here negotiating with the English language like, listen, just cooperate for another few paragraphs and I promise I'll proofread you later. If I will not proofread later, we both know this. Fourth wall break number two. Because once you start, stopping feels awkward. If you're still reading, thank you. This means either you are entertained or you are committed. And both are deeply respectable. If you are judging me, that's also fair. I would judge me too. In fact, I'm judging me right now while also typing, which is a complex emotional multitask. The beauty of writing something, at least at the last moment, is that it has no ego. It doesn't care about being perfect. It doesn't want to exist. This piece isn't trying to change the world. It's trying to reach 1,000 words and leave with dignity, or at least without tripping on the way out. You might notice that this keeps flowing without clear breaks. That's intentional, not because it's artistic, but because stopping would give me time to overthink. And overthinking is how projects die. Momentum is everything. That and snacks, mostly momentum. If there's a message hidden in all this rambling, it's probably that creativity doesn't always arrive polished. Sometimes it shows up messy, caffeinated, and slightly sleep deprived, talking directly to the reader like this is totally normal behavior, which it is. Completely normal. Don't make it weird. At this point, we are nearing the end. I can feel it. The word count is close enough that I can taste it. If this were a science fiction concept, this would be the moment where humanity narrowly survives by doing the bare minimum just in time. Very realistic, actually. So yes, this was written at the last moment. Yes, I broke the fourth wall repeatedly. Yes, it chose humor as a defense mechanism. And somehow, against all odds, it became a complete piece of writing, which is honestly more than I expected when I started. And now, before I overthink this and ruin it, I'm going to stop on purpose, like a responsible writer who definitely had this under control the whole time. Please pretend this ending was planned. ओ भाई ये तो बहुत ही मतलब इससे अच्छी तो मेटा कमेंट्री सुनी हे नहीं है। भगवान, व्हाट अंदर द जाके फक, मेरा दिमाग जाके फट चुका आफ्टर है भाई। आफ्टर डीप आफ्टर डीप आफ्टर डीप भाई दिमाग बोल रहा इससे उठ डीप बढ़िया लो। तो आफ्टर डीप इससे बढ़िया तो मेटा कमेंट्री मैंने नहीं सुनी भाई मतलब आज तक। इतना बढ़िया इतना डीप। वाओ। ऋषि भाई आपके चरण कहाँ पर है मेरा चरण दिखा दो ये तो बड़ा ही ये तो अमेजिंग था गेम के भाई। बाद लिखा है भाई मैंने। ये तो बड़ा ही अमेजिंग था। चरण दिखा दो मजा अपने आ गया। चरण चरण स्पर्श करा दो अपने। दिस अंदर वाज झाँक वेरी दिया गुड अंदर। यार। दिस वाज वेरी गुड। मजा आ गया। यस। वेरी नाइस। वेरी नाइस। भाई अब देखते हैं भाई नाइटविंग ने भी कुछ भेजा है। नाइटविंग ने भी कुछ अरे भेजा है। मैं नहीं लो भाई करता यार, ये मेरा बहुत बकचोद है भाई, तुम लोग मतलब अभी गाली तो तो सुना दो पढ़ ले, ये मत। तो पढ़ो सुनना तो एक सही। ना नहीं अरे पढ़ो यार तो यार ये सही। क्या बात हुई नहीं दे रहे भाई? मैं नहीं देंगे लिख पढ़ो तो पढ़ो दिया भाई मैंने। पढ़ो, कुछ नहीं होगा, सबने चलो ना। बकचोदी करी है, कुछ नहीं अबे भेज तो है। रहा हूँ। सपना तो बकचोदी होता है, भोसड़ी पागल है हाँ, क्या? हाँ। इवेंट इवेंट तुम्हारा खराब हो जाए तुम्हारी जिम्मेदारी, मैंने भेज दिया। अरे ठीक है ना पढ़ दो इसलिए तो इसे। तुझे लास्ट में रखा है साले। भेजना। हाँ, अरे ये पढ़ो एंड पढ़ो में पढ़ो पढ़ो। प्लीज काट देना अगर इस पसंद ना आए अच्छा तो। कटेगा तो नहीं। सपना, सपना, वाह। सपना डॉट टीएक्सटी ओके। हाँ, कौन आराम से पढ़ेगा? तू पढ़ियो। पढ़ेगा? तू खुद पढ़ेगा? मैं नहीं, कोई और पढ़ो यार प्लीज। चलो मैं ही ऐसे पढ़ता कौन हूँ। लिखता है? चलो मैं ही किंग्समैन तू पढ़ता हूँ। पढ़, किंग्समैन तू पढ़ भाई हिंदी आप में। पढ़ो साहिल भाई हाँ, मैं तो सिनेस्फायर कहूंगा पढ़ो तो हाँ बहुत मजा हाँ आएगा। साहिल सिनेस्फायर लेकिन प्लीज, साहिल का माइक प्लीज ऑफ है यार। ना, पता नहीं पढ़ पाएगा कि नहीं, देखते हैं। सिनेस्फायर बताओ पढ़ पाओगे? अभी कुछ मत पढ़ना है इसमें। सिनेस्फायर अरे बताओ मैं पढ़ पढ़ रहा पाओगे? हूँ, रुको, मैं पढ़ता चलो हूँ, ठीक चलो। रिसोर्स है, भाई पढ़ेंगे तगड़ा। हिंदी में है, और ये हिंदी में, इंग्लिश में नहीं है। मजा आएगा। स्टार्ट करूँ? वही थोड़ा यस जूम कर। स्टार्ट करो। जूम कर दे, थोड़ा थोड़ा बड़ा थोड़ा कर दे। तुम कर लो भाई, थोड़ा टेक्स्ट की साइज बढ़ा दो, अंधा हूँ मैं। अरे अरे अच्छा रुक जाओ कैसे बड़ा और करूँ? इस पे रिएक्शन कितना हाइट रिएक्शन है? दे दे। अरे कंट्रोल और स्क्रॉल व्हील ऊपर कर। अच्छा ठीक है। वाह। रिएक्शन रिएक्शन दे सकते हो आप लोग, मतलब ये कोई वैसी चीज तो है नहीं। पढ़ दो। पढ़ो करूँ? भाई रिसोर्स भाई। हाँ। शुरू करो। ओके।
एक नॉर्मल दिन था। सब किंग्समैन, ईट्रॉक्स, सिनेस्पाई, नाइट विंग एंड गट्स और भी कोई हो सकता है, याद नहीं आ रहा। वीसे बैठे हुए थे। एकदम से सिनेस्पाई बोलता है, भूख लग रही है यार। फिर ईट्रॉक्स ने बोला कि मिलते हैं और कुछ खाते हैं। फिर हम मिले और गट्स बोलता है बिरयानी खाते हैं। फिर हम सब गट्स के घर गए और फिर हम सब मुर्गे काटने लगे और बिरयानी बनाई। फिर बिरयानी खाई। फिर किंग्समैन ने बोला कि कुछ मीठा खाते हैं। उसके बाद सिनेस्पाई बोला कि पुर्तगाली के पास चलते हैं। फिर हम सब एक रूम के बाहर खड़े हो गए। पुर्तगाली पुर्तगाली चिल्लाने लगे। फिर बड़ी देर बाद इट्रॉक्स ने गुस्सा होके गेट तोड़ दिया। फिर हमने देखा कि पुर्तगाली पूरी ब्लैक पैंथर के साथ सेक्स कर रहा था, अरे रेड बाप सोफे पे। रे। हमने उससे बोला कि मीठा खाना है। फिर सेक्स करते करते उसने बताई कि थला के पास जाओ। फिर थला ने जो जलेबी दी दही के दही के साथ। साथ। अरे बाप रे, क्या ये सपना है क्या ये। सपना था भाई। व्हाट द फक, इसका क्या सपना था। सेक्स करते करते बोला कि अरे मिठाई खानी बाप रे, वो भी शूरी के साथ। व्हाट द फक। मजा आया, ये तो बढ़िया था, ये बढ़िया था। नो कमेंट्स, नो कमेंट्स भाई। अरे पीक यार नो फिक्शन, पीक कमेंट। फिक्शन था। बढ़िया था, बढ़िया था। मजा आया। और कोई है बस भाई भाई जिसको वो भेजना हो तो बता मुझे दो भाई भाई। वो सीन अपने का याद है, वो लाल सोफे पुर्तगाली शूरी नीचे लेटी हुई और सिनेस में पूछता मीठा खाना है। मीठा गाना। अरे बताओ भाई, बताओ। अरे अरे अरे, इतनी सारी चैट्स, इतनी क्या सारी था चैट्स। भाई। नाइट विंग मजा आ गया। अरे बाप रे। आउट ऑफ ऑल पीपल शूरी। वाह। मेटा क्या कमेंट्री तो वैरायटी, चैट में चल रही है। बहुत वैरायटी आई, ब्लैक बहुत बढ़िया। ब्लैक पैंथर। अरे भाई मजा आ गया। ईट्रॉक्स ने हॉस्टल में दरवाजा तोड़ दिया भाई। हाँ भाई उसने दरवाजा तोड़ दिया भाई। मजा आ हाँ, गया। हम बड़ी देर से चिल्लाए थे पुर्तगाली खोलो खोलो, खोल अरे ही नहीं रहा था। पुर्तगाली का पढ़ो ना यार। पुर्तगाली भेजा ही कहाँ है। अरे ओके ओके ओके। साले ने भेजा ही नहीं, साले ने ये भेज रखा है, क्या करें अब इसको, क्या पढ़े अब। लेस देन और बस हो गया। पीक फिक्शन। एनीवेज चलो, कोई बात नहीं। आई गेस इतने ही सबमिशंस थे आज के। एक बार रुको, मैं चेक कर लेता हूँ, रिक्वेस्ट वगैरह तो नहीं आई। नहीं आई है, कोई रिक्वेस्ट नहीं आई है, कुछ नहीं आया है। अरे मैसेज रिक्वेस्ट पे चेक करना, किसी को हो सकता है मैसेज अबे भेजना नहीं हो। आया है, ये चेक कर चुका हूँ, पुराना है। फ्रेंड ओ, रिक्वेस्ट में कुछ नहीं आया। नहीं, फ्रेंड उसमें तो रिक्वेस्ट क्या में ही क्यों होगा। आएगा, क्या अरे बात तो तो कर रहे भाई हो। कुछ लिखने के लिए पहले फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दियो। करना अच्छा। कहानी के साथ अंत करा है। वाओ। अरे बट वो क्या नाम है उसका, वो भी तो कुछ लिख रहा था, उसका क्या नाम है। अरे रोहित चरण भी तो बोल रहा था कि मैं लिख रहा हूँ, पर पता नहीं कैसा हाँ लगेगा। नहीं लिख रहा भाई, नहीं नहीं नहीं। अरे क्यों नहीं लिख रहा भाई, लिख दे यार। अरे यार सिर दर्द कर रहा था, लिख नहीं पाया। थोड़ा अच्छा सा लिख ही कुछ नहीं तो रहा। लिखा होगा, वही कुछ भेज तो दे, जो लिखा लिखा होगा है यार, वही। मतलब वही कुछ भेज नहीं दे। लिखा भाई, मेरी तरह कुछ लिख नहीं दो लिखा भाई। यार। अरे चल, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो बढ़िया। ड्राइंग वाले कंपटीशन में अपना पूरा हार्ट दे के दूंगा पूरा। चलो कल अब है, क्या कल ड्राइंग है, होगी, क्या होगा। कल है, कल अबे है वो ड्राइंग, ओपन ड्राइंग आज अपन थोड़ी कल है ड्राइंग। करेंगे। हाँ। क्या डोंट वरी। हाँ। आज नहीं होता सब। ना नहीं ना, नहीं नहीं। सारे थोड़ी ना होंगे आज, कल अबे ड्राइंग आज होगा और इतना परसों इतना सिंगिंग। पीक तो हो गया, अभी मुझे ये एब्जॉर्ब करने दे ये सब। एब्जॉर्ब करने दे। यस, ऐसा थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा रिफ्लेक्ट करने में समय ये जो तुझे सपना जो आया है लगेगा। तो भाई चलो भाई, यार ये तो बहुत बढ़िया था। तो एक एक नॉर्मल सा, बड़ा ही नॉर्मल सा आउटरो मैं ही दे दूं या सिनेस भाई देगा। रुको, सिनेस भाई को बोलता हूँ। सिनेस भाई आउटरो दे सकते हो आउटरो क्या। दे दो। सबमिट इन 1 मिनट इफ यू हैव समथिंग। 1 मिनट हो गया। अच्छा, नो बोल रहा है, सीनियस बोल तो रहा है तू नहीं नो। देगा, मैं दे दूंगा। चलो अब तू तुम दे देगा। दो। अरे मैं नहीं दे विदित रहा, नहीं है तुम क्या, दो। विदित भी मर गया क्या, सारे ही मर गए क्या। तो भाई लोग, ये था हमारा सिनेपीलिया इवेंट, मतलब हम सब ने बहुत मतलब वो देखे कि ओए मतलब जैसे ओए, गुकी भाई, सिनेफिलिया ऋषि इवेंट, भाई। द राइट अरे हेमिस्फीयर रुक नाम रुक है इसका। रुक नाइट रुक। सॉरी सॉरी सॉरी, एक तू आप नहीं देना। देगा। अच्छा आप नाइट दे तू दो। नहीं देगा, रुक जा रुक जा। हाँ। कौन देगा। कौन दे, फिर कोई तो देगा। अरे कौन देगा। रोक दिया। ये क्या अरे मजाक। मैं देता हूँ भाई, मैं देता हूँ।
अच्छा तू अरे देगा? तो दे। जैसे कि फ्रेंड पहुंच ही गए हैं तो आपने एक्सपीरियंस कर लिया होगा पीक ही पीक भाई कि सभी ने पी ही ले लिया और इसी के साथ इवेंट का पहला दिन खत्म होता है और राइट हेमिस्फेयर को और यूज करने के लिए आप दोबारा हमारे साथ कल आना। थैंक यू। धन्यवाद।